नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये हमारा तीसरा सीजन चल रहा है जिसमें आप हमारे एक्सपर्ट से बातें करेंगे और उनकी हमको दी गई शिक्षा सुनेंगे। आज हमारे साथ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमको देंगे विजुअल इनपुट्स के द्वारा। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। बेसिकली खाना किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, हमारा खाना किस तरह से अच्छा दिखे, न्यूट्रिएंट्स कैसे रिटेन हों उसमें, रंग हम उसके कैसे मेंटेन कर सकें, और इन सब चीजों को सीखकर हम सैटिस्फैक्टरली अपने लिए खाना और अपने घर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए खाना कैसे बनाएं। मेरे आज के मेहमान से मिलिए, ये है शेफ अक्षय कुलकर्णी, जो कि culinary ऑपरेशंस के हेड हैं culinary एकेडमी ऑफ इंडिया में। ये हैदराबाद का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इंडिया में एक अपने ही किस्म का culinary स्कूल है। शेफ अक्षय, वेलकम टू रसोई के रहस्य। हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पायल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे सुनने वाले आर वेरी वेरी एक्साइटेड, दे आर वेटिंग टू हियर किस तरह से वो अपना खाना अच्छा बना सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि टेस्ट में तो अच्छा बन जाता है, बिकॉज we are people who constantly dip spoons into हमारा खाना एंड उसको खाकर देखते हैं, टच कर देखते हैं। हम लोग अपने 4 सेंसेस यूज करके खाना बनाते हैं, बट विजुअल अपील कैसी लाई जाए खाने में? आई मीन इन द सेंस कि आपको पता ही है, अगर खाना अच्छा नहीं दिखता हो तो खुद को तो जो बुरा लगे सो लगे, आप सामने वाले को खाना वापस देना भी नहीं, सर्व करना भी नहीं चाहते। सो we in this show would like to understand कि ऐसे कौन से टिप्स हम अपना सकते हैं जिससे कि we are going to be able to retain all the necessary elements to make our food look presentable as well as taste good. Over to you, chef. Yes, पहली बात तो I need to congratulate you and आपके व्यूअर्स, क्योंकि मैंने कोशिश की आंख बंद करके खाना बनाने की, और मुझे पता चला कि हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि माय टिप्स विल प्रॉब्ली हेल्प ईच वन ऑफ यू हियर। लेट्स टेक विद द वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में वी हैव एक तो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक वी हैव पोटैटोज और वी प्रॉब्ली से कैरेट्स, एंड देन वी हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, and then we also have the colored vegetables. तो let's start with potatoes. आलू उबालने के लिए, in case you are not using a pressure cooker, तो the best way is cook it with the skin first thing. मतलब अगर पील मत करो आलू को एंड डायरेक्टली उसको पानी में डाल के उबालना शुरू करो, दैट इज द बेस्ट वे। और यू नीड टू स्टार्ट विथ कोल्ड वाटर। हमेशा आलू कोल्ड वाटर से शुरू करो बॉईल करना, so that the heat is penetrated evenly in the entire potato. Right. अगर अब इसे कैसा पता चले कि ये पक गया है, तो just take a sharp knife or a fork and try to pierce in the potato. ये अपने बटर में जैसा चाकू जाएगा आसानी से, that feel is good enough to tell that the potato is cooked. मतलब don't apply any pressure. चाकू should go on its own inside the potato. Green vegetables do not take much time to cook. And इसका disadvantage इतना होता है कि they lose a lot of minerals and vitamins if soaked in water for a long time. Right. तो कम से कम पानी लेना, और just required how much ever, and as soon as the water comes to a boil, add these green vegetables
1 minute should be good enough for these vegetables to cook for blanching. And but अगर आपको इसका अगर प्यूरी बनाना है तो maybe you can cook it a little longer. Right. But to retain vitamins and minerals, the lesser you keep it in water, the much better it is. And इसको शॉक भी करते हैं, मतलब it is called as shocking of vegetables. Right. So basically the cooking process, we have to stop it immediately. For that, as soon as you take it out from the boiling water, you immerse it in chilled water. Right. इसलिए उसको the term is shocking. From hot, you are immediately putting into cold. Right. So you shock the vegetables. The same with and one more thing that you need to keep in mind with green vegetables, इसको cover करके मत पकाइए, क्योंकि अगर आप cover करके पकाओगे तो इसका color जाने के chances ज़्यादा रहते हैं. There is an acid which is released initially, and that is, if it is trapped inside the vessel, it will discolor your green vegetables. So never cook green vegetables covered. Yeah. Correct. बाकी vegetables like say carrots हो या cauliflower हो, you allow first let the water reach a boil, so that because जितना कम टाइम आप पानी में इस वेजिटेबल्स को रखोगे उतना कम विटामिन्स और मिनरल्स इसके डिसॉल्व होने से बच जाएंगे. सो ट्राई एंड फिनिश ऑफ योर कुकिंग फास्ट. सो let the water boil and then add your vegetables into it. Right. इसका एक टर्म बोलते हैं जिसका we say it al dente cooking. मतलब it's just you need to take one piece the way you have cut it into your mouth, and it should just have that little crunch, and but it is also cooked. So that's what we call it. Correct. So that should be good enough for, and immediately shock it. As I say, as soon as you remove it from hot water, अगर आप chilled water में डालोगे तो the cooking process will stop. This will help in retaining the color also of all these vegetables. So all the vegetables, this is true of every vegetable. अगर इसको हम इस तरह से अलग से let's say हम लोग सब्जियों को हैंडल करके उसके बाद ग्रेवीज में डाल रहे हैं, तो this is true of all the vegetables. Yes, almost all the vegetables. Only आलू अगर एक बार पक जाए तो उसको फिर पानी में मत डालिए, because उबला आलू will start sucking water. Correct. और उसका स्टार्च मशी हो जाएगा फिर पूरा. Then it will become mushy also. But except for potato, बाकी सब सब्जी you can immediately immerse it in chilled water and keep it. Excellent. This will help retain color and also the cooking process will stop. Right. एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि ज्यादा करके अगर हम लोग खासकर इंडियन कुकिंग में जब हम लोग ज्यादा करके अपना रीजनल कुकिंग बहुत होता है, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अपने अपने तरह के कुकिंग करते हैं और दूसरे भी करते हैं. तो व्हेन वी आर कुकिंग, लेट्स से कि आप सब्जियां लेकर उसको ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं और इकट्ठा पकाएंगे, फॉर इंस्टेंस फ्रेश कुकिंग लेट्स से, या आप इवन अगर हंडी में लेकर भी हम कोई ग्रेवी बना रहे हैं कि ग्रेवी पहले बना लिया, उसके अंदर हमने वेजिटेबल डाला, रॉ वेजिटेबल डालकर उसको कुक करने के, लाइक प्रेशर कुकिंग में तो रॉ वेजिटेबल डलेगा. तो अगर इसी तरह से हम अगर कुछ कुकिंग करें जिसमें कि सिमरिंग हो, प्रेशर कुकिंग हो, इस तरह के प्रोसेसेस अगर यूज करें, तो ऐसे में व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक in the same for the same purpose, color or texture? अगर mixed vegetable curry अगर बना रहे हो, the first thing is a lot of people do it, लेकिन I always say it is wrong, because हर vegetable का एक cooking time रहता है. Correct. And in case you try to mix all these vegetables and cook it at a time, कोई सब्जी ज्यादा पकेगी और कोई सब्जी परफेक्ट पकेगी. तो the best is कि आप अलग से पका लो और फिर ग्रेवी पे डाल दो सब सब्जी एक साथ. Right. That's the easiest way to do it. 2, there is something called as uniform cutting of vegetables. अगर आप सब्जी बराबर साइज में नहीं काटोगे तो जो
the bigger vegetables will remain undercooked. So that is one important factor that you need to keep in mind कि सब्जी बराबर काटो, मतलब whatever shape size or size, uniform size is very important during the entire cooking process. But if it is a single vegetable, like if you're just doing a stir fry, मतलब beans का सब्जी बना रहे हो या पोरियल बना रहे हो, so you cut it into smaller pieces uniformly, and then you keep sauteing it over with your tempering. But to know whether it is cooked or not, the best way is take a little bit of it and put it in your mouth. Yes, I know. That's true. The taste test सबसे आसान चीज है. That would be very efficient. Because timing becomes a challenge. Sometimes कभी we get tougher vegetables in the market. Sometimes we get very tender vegetables. True. तो अगर टाइम के हिसाब से जाओगे तो अगर टफ वेजिटेबल्स है तो शायद पकेंगे नहीं. So I generally don't advise for timing. I would always say taste it and check whether it is cooked or not. और फ्लेवर्स भी रिटेन करने का, जैसे अब वेजिटेबल्स, सीजनल भी वेजिटेबल्स होते हैं, उसपे भी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज समर में इनवेरिएबली द वेजिटेबल्स दैट यू गेट थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, सब्जियों में वो उतना टेस्ट नहीं होता. आजकल वेजिटेबल्स पूरा ऑल ईयर राउंड मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम वी डोंट गेट वेजिटेबल्स दैट आर द सेम, जो कि मतलब रेन्स में हो या फिर विंटर में वेजिटेबल्स आते हैं वैसे नहीं होते. तो लाइक यू सेड कि टाइमिंग्स उसमें करना वुड बी अ प्रॉब्लम एंड it becomes a very big issue. अब अगर vegetables को हमने store करना हो, let's say if you're storing, I remember asking you at one point, तो आपने suggest किया था कि blanch करके store करना vegetables are better, especially when you're freezing them, क्योंकि it's been gone through the basic process and it stays sort of stays better. It's also a very faster way because market में अभी अपने को frozen vegetables भी मिलते हैं और dehydrated vegetables भी मिलते हैं. Right. ये basically is increasing the shelf life of the product. Plus आपका काम भी आसान. मैं खुद करता हूँ मेरे घर में. Every Sunday मैं 3-4 ग्रेवी बना के डीप फ्रीजर में डाल देता हूँ. पूरे मेरे सब्जी काट के ब्लैंच करके आई पुट इट इन पैकेट्स एंड डीप फ्रीजर में. तो हर रोज सिर्फ ग्रेवी निकालो, गरम करो, सब्जी उसमें डाल दो, विद इन 10 मिनट्स आपका खाना तैयार है. बट एक दिन की मेहनत रहेगी जिस दिन आपको बहुत सारे सब्जी काट के ब्लैंच करके तैयार रखने पड़ेंगे. वो that I think a lot of people do that also. करना भी पड़ता है because now खासकर when everybody is at home. Especially if you're working है तो ये आसान हो जाता है बहुत. और आजकल तो वर्किंग नॉन वर्किंग वैसे भी एक ही है ना. घर में हो तो there's more responsibility because घर में आप बैठ के काम भी कर रहे हैं and you have to ensure that your family is fed also. वो भी एक जरूरी काम है करने के लिए. अब उसमें तो और कुछ भी नहीं कर सकते. Yes. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी ग्रेवीज, दीज आर वेजिटेबल्स के लिए आपने टिप्स हमको दिए हैं. अब ग्रेवीज अगर हम लोग बना रहे हो, बिकॉज यू नो पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड एंड सबको अलग अलग किस्म की ग्रेवीज का शौक है, वो वाइट ग्रेवी हो, येलो हो, ब्राउन हो या रेड हो या जो भी हो. अब इसमें क्या होता है कई बार क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते, हमारी ग्रेवीज डिस्कलर होने का चांस काफी होता है. स्पेशली रेड्स तो खैर बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे भी डिपेंड करता है, स्पेशली लाइक टमाटोज एंड थिंग्स लाइक दैट. बट उसके अलावा इफ वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर डूइंग समथिंग राइट विद आवर ग्रेवीज इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, तो उसके लिए आपके पास हमारे लिए क्या सजेशंस होंगे? ये मतलब मैंने भी सोचा बिकॉज इंडियन ग्रेवीज में the most of the gravies are dependent, the color of the gravy basically is dependent on how much brown you do the onions. Right. Like let's say basic onion tomato masala. So in case the onions are not cooked till golden brown stage, there are a chances that you don't get the desired color for the gravy. तो ये this question is also bothering me कि
how to explain or how to ensure that you reach a stage of golden brown. मतलब हमारे लिए तो ठीक है, हम देख सकते हैं, पर I don't know how to explain that the onion should go up to golden brown stage. तो गोल्डन ब्राउन स्टेज आप कह रहे हैं कि बेसिकली गोल्डन ब्राउन स्टेज पर होना चाहिए this is for the tomato gravy you're saying? Yeah, this is for the onion tomato masala or just basic onion gravy, whatever we say. हाँ, तो उसमें हम लोग बेसिकली अब क्या है, this is I think education to you also. हमारे जो जनरल कुक्स हैं, अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप के ऊपर इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा था कि how done are onions, कैसे पता चलेगा हमको स्मेल से and things like that. So some people have established the fact कि onions, खासकर when the onions go into oil and आप onions को फ्राई कर रहे हैं, initially एक तो there are 2-3 aspects that came into being. एक था कि जब onions initially जाएंगे तो there's more of a sound sorry, because उसमें moisture है, तो वो moisture उसका जब तक moisture की आवाज आएगी in oil and slowly it starts getting quieter because moisture उसका evaporate होना शुरू हो जाता है and quantity starts shrinking. Right. And there's a very distinct smell of when the onion starts getting deeper brown होता है तो वो उसमें slightly burning का smell आना शुरू हो जाता है. the caramelization का ये आ जाएगा उसमें. golden brown में smell वैसा नहीं आता. You will probably get a हल्का स्मेल आएगा जिसमें आपको कैरमलाइजिंग या ब्राउनिंग का बिगनिंग का वैसा स्मेल आना शुरू हो जाता है. Is that the stage that we're talking about? Yes, it is that stage, golden brown. That's the stage. Great. तो हमारे listeners को I think हमारे काफी सारे discussions, क्योंकि these are the biggest challenging things जहाँ पे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि recipes में हम लोग language ऐसी use करें जिससे कि हमारे सुनने वाले जो हैं, जो देख नहीं सकते, वो सही तरह से समझ पाए कि at what point. Someone also suggested that the movement, of course, आपकी spatula का या spoon का जो movement रहेगा oil में वो भी change हो जाता है because there's more space and oil starts releasing as well. तो उसमें थोड़ा movement में भी stirring में फर्क आ जाता है. So these are a few things. But here I would the better option would be कि आप ग्रेवी कढ़ाई में बनाओ तो उसमें एडवांटेज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द शेप आपके जो भी whatever ingredient you're going to put वो it will keep coming into the center. बिल्कुल, हाँ, एकदम सही कहा. In case you take a vessel and if you are not able to stir it properly, then there are possibilities that some onions which are left on the sides might start burning. हाँ, बिल्कुल एकदम करेक्ट कह रहे हैं आप. So that's what. So I think encourage यही करते हैं लोगों को कि कढ़ाई जैसे आप कह रहे हैं, it gives you more of an opportunity to be in control कि उसमें क्या है, किस तरह साइड्स पे से उतारते रहना, वो हम लोग as a practice लोग उसको करते हैं. तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें गोल्डन ब्राउन अनियंस होने जरूरी है. अपने रेगुलर अनियन टमाटो जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेवी जो है उसके लिए most commonly used gravy है. Yes. Right. उसके लिए और even for your korma gravy, in case korma में भी you require a golden brown stage of the onions. अच्छा, उसमें full brown होगा, full brown onion होगा. हाँ. Korma. Golden brown color, and then the next ingredients would be started adding. So that gives the color for the gravy. Okay. That will decide. Because in case here अगर प्याज बराबर गोल्डन ब्राउन नहीं आया तो then the final color of the gravy automatically gets affected. कलर भी और टेक्सचर भी, क्योंकि आपके फिर वो अनियंस प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होंगे एंड आई थिंक खड़े रह जाते हैं अनियंस. करेक्ट. और वो ग्रेवी में दिखना भी शुरू हो जाते हैं अनियंस. Another question, onions के बारे में जब बात हो रही है तो what is the difference between using sliced onions and using chopped onions? ये काफी टाइम confusion होता है, कई रेसिपीज में sliced बोलते, कई में chopped बोलते. So people follow तो हम लोग कर लेते हैं उसको, but थोड़ा बहुत कभी decide करते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो is there any particular difference in terms of the end result product का जो फ्लेवर है या उसका टेक्सचर है, उसमें कोई फर्क होता है?
When you say, let's say we want to have golden fried, like biryani बना रहे हो और पुलाव बना रहे हो, you generally garnish it with golden fried onions. और biryani marination में भी हम golden fried onions डालते हैं. In such a case, sliced onions are better because if you chop the onions and try to fry them in oil, बहुत बारीक हो जाते हैं and sometimes they tend to go burn very fast. Right. So sliced onions are good to probably fry and keep them aside. Option one. Two, some dishes like jalfrezi लिया, तो the cut of the vegetable यहाँ पर सब सब्जी हम लंबे काटते हैं. तो since सब सब्जी लंबे काट रहे हैं, तो प्याज भी we will probably prefer to cut it sliced. Uniformity आ जाती है. Uniformity. It's basically for the uniformity. और पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव में भी we generally put it as sliced onions because वहाँ पर चावल जो है वो भी it will be a long grain rice. So we're just trying to be uniform with the looks into the entire dish. But otherwise no specific reason कि ये इसमें sliced जाना चाहिए और इसमें chop जाना चाहिए. But these are the only reasons why people would say in a recipe sliced onions or chopped onions. But it's not true of gravies. कई gravies में अब जैसे meats वाली कई सारी non-vegetarian gravies में मैंने देखा है कि the people use the recipe suggest कि दोनों हो. थोड़े आपके onions chopped हो, थोड़े आपके onions sliced हो. Is there any reason for that? No specific reason as such. Nothing. And I don't find you need to add. Although one dish where they probably say is do pyaza, where it's basically two types of twice you add onions into the gravy. But there again you slice the onions, you fry them, and then basically you make a paste out of it and then add it. The initial one would be a chopped onion where you're going to saute it. Okay. But no specific reason as to why sliced and chopped has to be used. It's just a matter of what works. Yeah, it's just a matter of what works. And कई बार पतला sliced हो तो वो मैंने भी notice किया है कि thinly sliced onions somehow cook quicker than chopped onions for some strange reason. पता नहीं क्यों. But that's a feeling I get कि onion slice अगर खासकर finely sliced हो so they cook really quickly. Yeah, that is anyhow there because जितना पतला सब्जी को काटोगे उतना वो कैसा भी fast cook होएगा ही. It's like it's need not be just onion. आप carrots भी ले लो और cabbage भी ले लो. और अगर you cut them very finely, the cooking process is going to be much faster. Because you already made it into such. हाँ, इतना छोटा काट दिया है कि पकने के लिए आसान हो जाए. और अभी तो ये we did onions browning हमने decide किया कि browning onions is a very critical factor in the final color and texture of the gravy. वो हमको पता चल गया. हमने fully browned onions for the korma gravy. तो korma का gravy अगर हम इसको let's say for the sake of our listeners कि color दिया जाए तो is this the yellow gravy or is it a white gravy? That depends. The white gravy के लिए onions will not because that is white gravy is called as shahi gravy. Okay, correct. So shahi gravy में you will use an onion paste. You will not allow that onions to go brown because you want it white. Okay. और बताइए तो फिर मतलब that will be the yellow gravy. Korma is अपना yellow gravy होगा? Korma gravy will be a yellow gravy. Okay. So there you will probably after you brown your onions you'll add your ginger garlic और turmeric भी डाल दोगे आप. So that's what will make your gravy go a little yellowish in color. Okay. And white gravy में जैसे आप कह रहे हैं या तो raw होंगे onions या boiled onion paste suggest करते हैं. I mean usually I know recipes of gravies में. There are two ways of how people do it. Few people boil the onions along with some cardamom. And after boiling it, they make a fine paste out of it. Right. There is a version where you will first make a raw onion puree, and then you start sauteing this in a little amount of ghee, and then add the next of the ingredients.
So whichever suits good for you, you can probably adopt that. बट इसमें आप जैसे फ्राई कर रहे हैं, हम लोग अनियंस अगर फ्राई कर रहे हैं फॉर द शाही ग्रेवी, उसको पहले रॉ अनियंस को पेस्ट करके हम फ्राई कर रहे हैं, तो इसमें भी इसमें कलरिंग का किस तरह से होगा? बिकॉज मेरे को जहां तक नहीं याद है, आएगा कलर, बिकॉज once you blend the onions, उसमें मॉइस्चर बहुत रहेगा. करेक्ट. एंड मिनट यू हैव मॉइस्चर, अनियंस कभी भी ब्राउन नहीं होंगे. that's another important thing. Yeah, okay. हाँ, because caramelization का टेम्परेचर रहता है 167 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay. 162 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay. And boiling point of water is 100 degree centigrade. Correct. So आपको अगर ग्रेवी को कलर करना, तो you don't want anything to go brown. Always ensure that there is moisture in the gravy, in your vessel. आपकी ग्रेवी कभी भी डिस्कलर नहीं हो. So even in our जैसे कई लोग हम लोग बना लेते हैं रेड अपना यूजुअल अनियन टमाटो ग्रेवी अगर बनाया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग चॉप करके बनाने की जगह पर उसको हम लोग प्यूरे कर लेते हैं. प्यूरे करके अनियंस को मिक्सी में रन करके और फिर टमाटोस को मिक्सी में रन करके हम उसका ग्रेवी बनाते हैं जब, तो उसमें भी आई नोटिस्ड कि थोड़ा सा रॉनेस, कितना भी कोशिश करो एक हल्का रॉनेस का स्मेल रह जाता है. एनी पर्टिकुलर रीजन? Because once you blend an onion raw and then you try to cook it, people tend to add the next ingredient quite fast. They don't wait for the onions to properly cook. If they try to wait, generally क्या होता है कि it becomes a little tougher because the onions start getting stuck to the bottom of the pan. Right. The secret out here is, if you find that the onions are getting stuck, add a little bit of water and let the onions boil. Okay. The rawness will go off. Right. You can always smell. You can keep smelling the onions while it is getting cooked till that raw flavor goes. हाँ, so ये एक चीज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे आप कह रहे हैं, there's always this thing in the head के brown होना है. Two important things that you have brought for us here is कि the onions will never brown. खासकर आप जो कह रहे हैं प्यूरेड अनियंस को हम लोग उसको ग्रेवी में, प्यूरेड अनियंस कभी नहीं होंगे ब्राउन. हाँ, तो they'll start getting stuck to the bottom of the pan, but they'll not go brown the way chopped onions will go brown. तो इस टाइम पे अगर मतलब लगने शुरू हो जाते हैं पैन में, तो उसमें पानी डालकर उसको हल्की देर अगर हम बॉईल करने दें for about maybe 2-3 minutes, so that smell will go also. Yes. That's it. Yes, that will be better. That's a better option. Yeah, that's another very very important tip. और ये ठीक है, ये ग्रेवीज थोड़ा बहुत हमने जैसे आपने बताया टू इंश्योर कि हमारी ग्रेवीज डिस्कलर ना हो. इन अ व्हाइट ग्रेवी, onions again, I think onions again are the bane of our life in a way. अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोना और सबसे ज्यादा काम onions के साथ ही है. अगर हम लोग बिना अनियंस के कुछ बना रहे हैं, तो ऐसे कोई सजेशंस हैं दैट नॉट ड्राई, अगर वेट ग्रेवीज ही हो, या हम लोग मीट्स, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट मीट्स, कि अगर हम लोग मीट्स बना रहे हैं तो उसको भी चिकन हो या मटन हो, उसको किस तरह से हम लोग इंश्योर करें कि हमारा पकाना आसान हो उसके साथ में. With you, मतलब अनियंस के साथ, और ये जस्ट टॉकिंग अबाउट कुकिंग मीट्स? With anything, मतलब अगर मीट यूज कर रहे हैं हम लोग, मीट अगर कोई पका रहे हैं, तो उसमें भी क्या ये रूल अप्लाई होता है कि द कलर ऑफ अनियंस विल अल्टीमेटली डिसाइड कि आपका अनियन, आपका टोटल डिश किस तरह से बनेगा? यहाँ पर भी वो अब लागू होता है? Yeah, because it's onions are going to give color to the gravy. Okay. Now, once your gravy is made, next is whatever you're going to add is going to get cooked in that gravy. So, उसमें color automatically if it is on the color. Yes, correct. So that gravy is not going to give color to your vegetable or to your meat, but it is that's the color of the gravy. It's the base, yes.
उसके ऊपर इंग्रेडिएंट आपका अंदर कुछ भी हो, उसका इंग्रेडिएंट उसके अंदर बाकी आपका जो भी correct. So let's say you're doing a chicken tikka makhani. So if you take makhani gravy and add just chicken into that, the chicken will not get the color. The chicken gets the color in the chicken marination. When you marinate the chicken with its own marination, that takes the color of the chicken takes the color of the marination, not of the gravy. Correct. Okay. So that makes sense. So चिकन का अपना जो उसका जो भी वेजिटेबल हो या मीट हो या जो भी हो, उसकी पर्सनालिटी उसकी अलग अपनी तरफ से, it comes separately with whatever processing is being done to it. That is eventually not going to impact the gravy. Not going to, yes, absolutely. Excellent. And with the chicken, I'll probably give you something which will be much more easier. Always when you marinate chicken, that initial marination, you put salt and lemon juice and leave it for 10 minutes. Okay. After that, you add whatever marination you want. But that initial marination, you make sure that it is salt and lemon juice. Two things happen here. Lemon will also tenderize your meat. Okay. Two, it will also ensure that the salt is sucked inside the chicken. Right, correct. Because taste वैसे ही उसमें otherwise कुछ भी नहीं होगा. And after that, whatever you want, whatever marination you want, you can go ahead. Chili powder, धनिया डालना है आपको, turmeric डालना है. That's a different case. And once you put your chicken in the gravy, just put it on simmer, cover it exactly 15 minutes. Switch it off. Oh, that's it. And leave it for another 10 minutes. Your chicken is 100% cooked. Take it for granted. Excellent. तो इनिशियली इसको फिर ये मैरिनेट करने के बाद चिकन को हम पहले भून रहे हैं थोड़ा, या किस तरह से कर रहे हैं? आप कैसे सजेस्ट करते हैं? How do we begin? Of course, recipes अलग-अलग होती हैं. That is by the recipe or what dish you want to make. In case you are putting it in a gravy, then directly put it in a gravy. But let's say if it is something like a dry chicken dish that you're trying to make it, then you'll have to थोड़ा भूनना पड़ेगा. तो वो उसको मतलब भून के थोड़ा सेयर करके उसके बाद तो वो तो और भी जल्दी पक जाएगा, बिकॉज वो इनिशियल उसका सेयर. Yes. But ये 15 minute meats have to be cooked on low heat for longer time. Right. Don't try to cook it on higher heats at all. Tough हो जाते हैं. That's where things start getting tougher. तो वो ये सब सिमर हमारा simmering is necessary over here. उसमें flavors भी उसी तरह से फिर पूरा blend होंगे और mix होंगे. Correct. Yes. Okay. So this sounds extremely interesting. Lots of new things here. और आपके पास अपनी तरफ से और कोई suggestions हैं हमारे लिए, जिससे कि I think we've covered quite a bit about the retailing and the basic process that we are going to use cooking के लिए, जिससे कि हम लोग जैसा चाहें वो हो सके. अब अगर आप हमको इसका अगला स्टेप भी बताएं कि we've ensured कि हमारा खाना, हमारे वेजिटेबल्स ठीक से कुक हो, हमारे मीट्स हम लोग ठीक तरह से ट्रीट करें, हमारे अनियंस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्राउन ठीक तरह से हो. अब अगर हम खाना फाइनली सर्व कर रहे हैं टेबल पे, दैट्स अल्टीमेटली तो इतना सब करा, टेस्ट कर लिया, सब टेस्ट ठीक है. अब फाइनल टेबल पे डालने के टाइम पे दैट्स द मेन थिंग कि वी वांट आवर फूड्स टू लुक गुड. We want the dish to go on the table looking really nice and pretty, क्योंकि guests आएंगे, guests को किस तरह से हम लोग serve करें, या घर पे भी for that matter. तो would you have suggestions for us कि हम presentation, खाने की final presentation को किस तरह से improve कर सकते हैं? Garnishes हो या कुछ हो. I think knives हम लोग सब, for your information, हम लोग knives सब लोग आराम से use कर लेते हैं. कई लोग थोड़े ज़्यादा efficiently than the others. Some use chopping boards. Some just hold it in their hand and are very efficient with it. Complex, vegetable, अगर carving वगैरह जैसे हम लोग देखते हैं, कई चीज़ें fancy चीज़ें होती हैं on platters. वो शायद हम ना भी कर पाए, but I think अगर कुछ basic चीज़ें जो मेरे भी दिमाग में आ रही हैं,
कुछ अगर बेसिक इस तरह की चीजें हो, वेजिटेबल कट्स वगैरह हो जो हम सैलेड में या कुछ या सब्जी पर ही डालकर हम उसको सर्व कर सकें. So any ideas over there would be wonderful. With the Indian food, on the Indian खाने में generally carved vegetables तो कभी कोई use नहीं करता ज़्यादा. नहीं करते I don't think we have to. Correct. Yes. We don't use much. Yeah. So one is the presentation bowl. So the fancier the presentation bowls that you've got, automatically the presentation bowl is going to give you one nice look for that dish that you have made. Mm-hmm. That is the first thing. Mm-hmm. Second, try and use contrasting colors. मतलब अगर like say पालक का ग्रेवी है तो उसमें अगर कोथिमीर डालने से दिखेगी ही नहीं. So it doesn't make sense. Correct. There, try and use cream. Well, the cream is one option. Julienne of ginger को fine काट के, that is one option. Or even if it's a tomato-based gravy, you can again use cream to go as a garnish. Chopped coriander, chopped mint or fresh mint leaves. These are good garnishes. अगर fish है तो generally we can use lemon because lemon and fish go very well with each other. So try and use contrast. But the coriander is considered as a universal. So in case nothing is available, coriander definitely can be used as a garnish. But for Indian food, I don't think we need to make too many complicated garnishes because the color of the gravy itself is so appealing that itself starts looking very nice. It's not really not required to embellish it further. और also जैसे हम लोग सोचते थे कि आप उसी टाइम पे खाना अगर मतलब बना रहे हैं, so it might be a good idea to also plan in such a way जहाँ पर आपकी अगर 2 या 3 चीजें आप बना रहे हैं तो उसके कलर्स भी अगर वेरी करें तो प्लानिंग में ही. Yes. In case you're taking a menu, then you have to plan in such a way कि you get different colors on the dishes. मतलब let's say you're doing palak paneer, then you have a yellow dal and then you do a jeera pulao. So jeera pulao आपको थोड़ा whitish color दे देगा, दाल आपका yellow color दे देगा, palak paneer is going to give you a green color, and then उसके साथ में अगर salad देना है तो then you can make a tomato salad. So you basically पूरे colors. So then the plate starts looking, when you take it on a plate, आपका plate बहुत colorful दिखता है. So उसको color planning the more में colors the more colors you also have it on your menu. Colors also help in giving nutrition. So try and ensure that you have different colors coming into your different dishes. That way. It adds to the visual appeal, and at the end of the day आपको सर्व करके भी खुशी होगी और खाने वाले को भी खुशी होगी. Yes, it is not just colors. You also need to talk about when it comes to menu balancing, even about the textures. You can't have everything coming soft and mushy. अगर एक चीज soft and mushy है तो make sure that the other one is giving you a little crispier texture. Examples देंगे साथ में हमको. Examples कुछ. Examples, let's say we are doing a makhani gravy. So makhani gravy by itself is going to be very soft to eat out there. Right. It's a silky smooth thing that you're going to get into your mouth. Along with it, in case I want to put a dal out there, then I would not give a yellow dal because yellow dal will also probably give me the same texture. Correct. Then I will try to take a dal which is going to be a little coarse, I will not finely blend that dal. Probably make maa ki dal where I get a little coarser texture coming out of it. Moong le lo nahi to. Have a moong dal present there. So try and do a little bit of change in your textures. Don't serve puri because puri would be very soft again. I would probably go with a paratha which will give me a crispier texture coming onto it. That way. So variation in textures, apart from just the colors, textures में भी variation लाना जरूरी है. Yes. खाने में भी उसमें मजा है, and I think visual appeal में भी फर्क आ जाता है काफी.
Yes, it helps in everything. For the visual appeal, you're probably talking about variety in colors, variety in taste, variety in textures. और अगर if let's say कि हम लोग थोड़ा सा इंडियन फूड से थोड़ा सा डिविएट होकर अगर you know a lot of us make things like soups, a lot of us make things like you know ovens में या pastas बन जाते हैं अलग कलर के सॉसेस वगैरह के साथ. So any specific instructions for this for us to cook like this? Yes, when you're talking about pasta now, we have you can call it as a thumb rule. I don't know if you people make fresh pastas, but market में जो pasta मिलता है वो तो these are all dry pastas. हाँ हम लोग fresh तो I don't think हम लोग fresh हम लोग I don't think we've attempted any of us. Correct. So अगर ये dry pasta जो है the cooking time you can take it as a thumb rule. It is 7 minutes exactly. So boiling water, add a little bit of oil and salt. As soon as the water starts boiling, add your dried pasta and time it 7 minutes and take it off. Your pasta comes exactly al dente at that stage. इधर भी cooking stop करना होता है. Here also you need to stop the cooking, right? Yeah, here also you need to stop immediately. You'll have to remove the pasta from the hot water. Two options: you can put it in chilled water to stop the cooking process, or you take a flat tray and spread it. With pasta, you'll have to drizzle a little oil so that they don't, because it is starch, you don't want them to stick together. So थोड़ा तेल डाल के just toss it and keep it aside. तो इसको खोल के रख दिया तो it sort of doesn't stick to each other. अगर कुछ by chance कुछ over cooking हो भी गया. Correct. Dried pasta के साथ generally tomato based sauces or oil based sauces go very well. If it is a fresh pasta, then cream based sauces generally go very well. That's how it goes. So? Okay, all right. Yes. So that's basically a rule. The fresh pasta absorbs the cream-based sauces inside very well, not the dry pasta. Dry pasta, a tomato-based sauce or an oil-based sauce, they absolutely go very well with that. Then the texture gets retained also, smoother. Yes, texture also gets retained along with that. इधर एक और मेरे को डाउट आ रहा है. Now that we're talking about pastas and things like that, पास्ता से हट के let's talk about, let's say, noodles. हम लोग, because we have lots of people who are enthusiastic Indo-Chinese cooking का लोग खाना बनाना की कोशिश हम लोग सब करते हैं. तो what is the difference in when we are cooking dry pasta and जो भी हम लोग को मार्केट में noodles मिलते हैं, हक्का बोलते हैं, कुछ और egg noodles बोलते हैं, वे जो भी बोले. So what is the difference in handling these two? Not really, because even noodles come as part of pasta only. It's the same thing. You have, if you're talking about the mixture, it's again flour, you're going to have egg. If you say egg noodles, then they have egg and a little moisture for binding. And after that, it runs through various machines which give this characterized shapes to that. तो पकाने में, कुकिंग में, जैसे हम पास्ता को तो हम लोग पानी बॉईल करके उसको पास्ता को अंदर डाल के हमने 7 minutes बॉईल किया, बट नूडल्स को correct. Noodles also you'll have to first initially you will have to blanch them initially, so it's going to be the same thing again. बट नूडल्स को तो बॉईल नहीं कर सकते ना. नूडल्स को तो बॉईल पानी में डाल के उसको do you allow the water to continue boiling or do you just leave it in? Yes, you will have to, because they don't cook immediately. Time लगता है उसको भी पकने के लिए. But only thing is with the noodles, we toss the noodles with various different sauces for a little longer time. So we don't, when you cook noodles in water, we don't cook them completely. Right. We just half cook them here, and then half cooking happens while you are tossing it in the kadai. Stir frying में वो हो जाता है, cooking हो जाता है उससे. बाकी बच्चा कुछ. हाँ, stir frying में the balance cooking happens that way. So these are, because a lot of us sometimes tend to mistake the two and end up with a whole bunch of mush instead of a lump of maida instead of noodles या pasta. तो मुझे एकदम ध्यान आया क्योंकि हम लोग enthusiasts तो हैं, हमारे
audience जो है, they're very very enthusiastic cooks, so they try all sorts of things. So this was a thought. पास्ता में अपना सॉस रेडी रहता है, and then you just mix it up. ज़्यादा time you don't have to cook the pasta. Then you probably put it in your dish. Cheese ऊपर से डाल दो, garnish डाल दो, and you start serving it. Or you'll probably, if you want to bake it, you'll bake that pasta. But when it comes to noodles, we toss the noodles with a lot of other ingredients. If you're using meats or if you're using vegetables, soya sauce डालोगे आप, ketchup डालोगे or whatever it is. And then you keep tossing the noodles. So that's the reason you'll probably like to cook the noodles halfway in water and halfway you'll probably finish it off in the kadai. Okay, that sounds good. मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ा सा वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स के शेप्स मेरे को याद आ रहे हैं, जस्ट लाइक दैट फॉर अ सैलेड प्लेटर या कुछ और, अगर हम किसी का मन करे सीखने का, garnishes should put. So some very simple suggestions of cuts that how we can cut our vegetables, salad vegetables specifically. अगर देखिए carrots अगर काटे, मुझे याद है हम लोग flowers बनाते थे carrots की, और या cucumber हो या कोई और इस तरह के. Are there any tips that you can give us? मतलब verbally, can you think of something? Yeah, in case you want some fancy shapes coming out, one is we get a peeler where the other side of it is got some serrated edges. Remember, we used to, one side is a peeler, the other side you will have serrated peeler edges. Serrated edge, yes. Serrated edge उसके साथ. Like we have it on a bread knife, like that. So you can, after peeling the carrot or after peeling the cucumber, you can again start using the serrated side of that peeler and scrape it. And then you slice it. So automatically you get a very fancy looking serrated edgy kind of thing ऐसे, और उसको diagonal कर दिया तो और भी fancy हो जाते हैं. Yes, absolutely. So that is one way. We also have scoops available in the market, vegetable scoops. So you want to scoop out vegetables or fruits, you can probably scoop them out. That is one other scoop vegetables, fruits भी करते हैं ना, watermelon and lots of fruits also they scoop. Yes, watermelon, pineapple or mango का season चल रहा है. Right. So those, I think scoops are a good idea. वैसे भी potato वगैरह भी raw अगर आप scoop करके, you can maybe fry up a few potatoes also and use them. I think those will also look nice. हाँ. और टमाटो, मेरे को याद है टमाटो भी किचे करते थे हम लोग, टमाटो को भी किसी तरह से काट के, it used to be I'm trying to remember, मेरे को याद नहीं आ रहा, but we used to cut tomatoes also a particular way. One way of first thing is, whenever you're cutting vegetables for your salads and this one, make sure that you have an absolutely sharp knife. That is the key to get. That is the key to probably have a very fine cut of all this. Tomatoes you can have cut the tomato into half and then start slicing it very very thinly, and then I don't know, Abhi, I don't know how to explain to you how to do it. That's definitely a challenge for me. Are we making flowers? What are we making out of them? Flowers, making a flower out of it then. तो उसको मतलब बीच में से we've cut it center से, मतलब उसको आप जैसे इक्वेटर से काट कर उसके बाद उसका zigzag बनता है ऊपर, correct? No, I'm not talking about that. No, I think we will leave it. I don't think I'll be able to explain this. Next time I meet you, I will probably come and show it. Then you can explain it in your chat. ठीक है. फिर I'll be able to explain it. Yes, I know. थोड़ा translation में loss हो जाता है, थोड़ा translation में. Correct. Yes. And of course, potato sallis also go really well with some of the non-veg salli वगैरह उसमें तो आलू का पतला. Yes, you can. Correct. That can be used as garnish also. Lachas can be used. Yeah. Onions also. A lot of things. Onion rings उसको काट कर Lebanon onion rings भी डाला जा सकता है. Onion. Whenever you're using onion rings as garnish, make sure that you, after you slice it, you put it in ice cold water and then remove it from it.
it gives a nice crunch. You get a freshness and crunch into those onions. अच्छा, so when you're cutting onions, मतलब अगर सैलेड में या मतलब किसी पे हम लोग सिर्फ सैलेड onions के लिए सर्व है करें तो onions को स्लाइस yeah, करके cold water. put it in cold water and then remove it. Then you get a very nice crispy texture to the onions, plus एक freshness भी आ जाता है. Excellent. Yes, this is an important tip. So gosh, there's been so much. इतना सब information है और इतना सब मेरे दिमाग में तो pop up होते जा रहा है. I think I'll save that for another time. यहाँ पे मेरे सुनने वाले भी परेशान हो जाएंगे और confuse हो जाएंगे. I think आपके साथ बैठ के मेरे को एक और सेशन करना है about table laying, the table length, तो service. This हमने अभी तक ये आपसे किचन वगैरह की थोड़ी जो इम्पोर्टेंट जानकारी ली है. नेक्स्ट आई थिंक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी एट सम पॉइंट कि वी विल डिस्कस द सर्विस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. Definitely. टेबल को लेकर ना एंड थिंग्स लाइक दैट वी डू another episode on that. So I hope आपको हमने ज्यादा परेशान नहीं किया बहुत कुछ समझाने के लिए. बिल्कुल नहीं, मतलब I am loving this. It is definitely a challenge and मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ. I said why don't you guys also try blindfolding yourself and try to cook. Let's see what comes out. Oh yes. I think that will be an extremely interesting experience क्योंकि more than anything else I think you are grooming chefs जिनकी बेसिक हम लोग ने रियलाइज किया है किचन अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट. हम लोग की एनर्जीज जो है हम लोग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही zeroed in होती है. Our awareness is completely in what we're doing in the kitchen because of the loss of eyesight. वो 4 senses जो है full high alert पे होते हैं हमारे. So I think आपके बच्चों के लिए that will be a good exercise in concentration as well. Yes, absolutely. Thank you so much, Chef. आपने काफी टाइम हमने आपका लिया and there are some very very important tips and I'm sure मेरे सुनने वाले जो है रसोई के रहस्य के they would have found this extremely interesting and we will look forward to having more conversations with you as time goes on. And आप हमारे साथ जुड़े रहिए. I think we have lots to learn from you and perhaps share some of our experiences with you as well. Thank you, Payal. It was a pleasure talking to you, and yes, I will always be available for any of your future episodes that you want me to be in. Fabulous. अब I think आगे चल के हम थोड़े से रेसिपीज वगैरह भी आपसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो आप तैयार हो जाइए, अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए आप हमको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ. Yes, no, next time I will probably, whenever I'm going to give you recipes, मैं खुद पहले आंख बंद करके पकाऊंगा. Then it will be easier for me to explain also. एकदम. We look forward to it. Thank you, Chef. और आपसे फिर आगे हम बात करेंगे. Okay, thank you. आज का एपिसोड यहाँ तक ही. आप जरूर सुनिए और हमको बताइए आपको ये कैसा लगा, इसमें आपको कितना कुछ सीखने को मिला. हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर. इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य.